हम्म सर एक्चुअली मु ए डाटाटा नेइथिले सर ठीक ए अच्छे जस्ट डाटा वेट हाँ कस्टमर आईडी प्रोडक्ट आईडी ट्रांजैक्शन डेट हाँ प्राइस अच्छे प्राइस ए डाटा नेइथिले हम्म नेला ପରେ सर मु तापर फर्स्ट एडा कोली सर ओके फाइन 30 days रो बाहर कलो 30 days रे केतेटा तमे तापर कौन कलो ताको 30 days रो नंबर ओके तो जॉइन कर दे तुमरो जॉइन रो करिकरी नंबर बाहर करे कौन माने रिक्वायरमेंट तो किसी नहीं मु कहथिली कौन कहलो कि प्रोडक्ट नेम काउंट रो हाँ केतेटा प्रोडक्ट तमरो ईच माने प्रोडक्ट टा ए सेम मंथ रे केते को प्रोडक्ट टा मैक्सिमम सेल हेछि तमे कौन हाँ करिवो ना यस सर प्रोडक्ट प्राइस काउंट बाहर करिवो नो नीड टू फाइंड आउट कि तमरो एटा हाँ सर मु एक्चुअली ग्रुप बाय करी करली सर किंतु किंतु हम्म आपण खाली विंडो फंक्शन पढो एडा क्वेश्चन पचारथिले ना सर तो हम्म मु भाबिली विंडो फंक्शन रे गोटे थर करी काउंट रे तो हे जिवो सेटा काउंट ग्रुप बाय करी डॉट काउंट कर देले बट से काउंट रे कोन होजी सर आमे ए जाक आपण जो रिक्वायरमेंट जोडा थिला ना सर प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम आ विच कैटेगरी प्रोडक्ट से सब माने कॉलम जाक आसीबोनी भाबिगिरी मु हम्म प्रोडक्ट ग्रुप बाय करलिन सर काउंट रे करलिन माने ग्रुप बाय जदी अच्छा करिया सर से खाली प्रोडक्ट आईडी आका आसी ना सर प्रोडक्ट आईडी आ ता अकाउंट आ देखेबो तुम सेमती ट्राई करनो काउंट ସେଇଟା ବି ମାନେ କାଉंट କରିକି ବି କାଉंट ତମେ ବାହାର କର ଠିକ ଅଛି यस କାଉंट सर ତମେ ବାହାର କରିକି ତମେ ମାନେ ୱିଣ୍ଡୋ ଫଙ୍କସନ ରେ କାଉंट ଟ୍ରାଏ କର ନା Per ओके minute। सर आई ट्राई इट काइंडली सर आपण काली विंडो फंक्शन रे एग्रीगेट टा माने पीपीटी रे अछि सर मु देखिली सेडा आपण काली कहलेनी बोधे आई थिंक मिस हैला सेडा କୋଉଟା ମାନେ ଏଇ विंडो ପାଞ୍ଚଟା फंक्शन ୱିଣ୍ଡୋ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଗୁଡା କହିଛି ମୁଁ ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟା ଏଗ୍ରିଗେଟ ଫଙ୍କସନ ଯୋଉଟା एग्रीगेट फंक्शन जा कोई नंती बोधे एग्रीगेट फंक्शन ମୁଁ ଆମେ ତୁମେ ଏସକ୍यूଏल ରେ पढ़िଥିଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିନଥିଲି हाँ ଓକେ ମୁଁ ओके ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି क्वेश्चन देली कि प्रैक्टिस करो ବୋଲି ओके यस सर हम्म हेले मु एडा रो नंबर डिसेंडिंग कर देली सर फर्स्ट रो नंबर डिसेंडिंग हाईएस्ट रो नंबर जोड़ा थिबो हम्म मीन्स हाईएस्ट काउंट जोड़ा थिबो ताको लिमिट कर 1 देखि देली सर बट प्रॉब्लम कोन होजी सर जेतेबेले एडे मल्टीपल थिले सेडे प्रॉब्लम आसी सर जिंदगी आपको देखिए देली मल्टीपल ओके एडे सर मोर आसी एडा चारटा अछि सर कैटेगरी प्रोडक्ट हम्म 6 भी चारटा अछि प्रोडक्ट 8 8 भी चारटा अछि प्रोडक्ट 2 भी 8 अछि हम्म चारटा अछि प्रोडक्ट 10 भी चारटा अछि सर हेले मैक्सिमम नंबर 5 चारटा भी 5टा अछि सर काउंट टा हेले से क्षेत्र रे प्रॉब्लम आसी सर से क्षेत्र रे आको जे मैक्सिमम जितने आसु सुनो मैक्सिमम जितने आसु डजंट मैटर तुमको खाली प्रोडक्ट ही बाहर करना अछि यस एट द सर एंड तुम प्रोडक्ट आईडी तुम की प्रोडक्ट आईडी की प्रोडक्ट नेम बाहर करियो डजंट मैटर कि सेटा हेति पय को होची ना काउंट जते बेले आसीबो सब रोल नंबर भी नेला दैट इज बी फाइन ओके रोल नंबर जते बेले मैक्सिमम होची रोल नंबर ऊपर मैक्सिमम रोल नंबर बाहर कर दियो ओके हम्म यस सर मैक्सिमम ऑफ रो नंबर तापरे पार्टीशन बाय तमे यदि यूज करिवो एंड ओवर करिकी पार्टीशन बाय कहा को कॉलम ऊपर पार्टीशन सर एडे एमती कोले ता परे अच्छा तुम ताको जॉइन डीएफ कर दल्ला डीएफ aggregate डॉट हाँ aggregate सर maximum row number with column okay then come down एडा कोली सर जॉइन कोली जॉइन हाँ करी सेमी लेफ्ट सेमी कर देली काहे सर एडा डायरेक्ट रो मैक्सिमम रो नम डायरेक्ट जदी मु फिल्टर कंडीशन रे पकोची से गोटे एरर आसे सर एक्सपीआरएल गोटे एरर कोन आसे डायरेक्ट हाँ तमे कंपेयर करी ताको होनी हाँ डायरेक्टली नहीं तमे ताको कौन माने तो रिनेम तो करिचो मैक्स तो रिनेम करिचो मैक्स रो नंबर ओके ठीक अछि दीज आर द 5 records टॉप 5 records एटा बाहरला ना कौन नहीं नहीं सर मैं एक्चुअली कौन कले जॉइन कर देली सर से हाँ मैक्स रो नंबर टा नेली सर मैक्स रो नंबर 4 ही आसे से 4 को नो मु नो 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 ए डाटा सहित जॉइन चारि करदेली ओके ନାଇଁ ସେମିତି କେବେ ଜଏନ କରିବନି ନମ୍ବର ୱାଇଜ ତମେ ଏଇଟା ଯୋଉ କରୁଛ ସେଇଟା କରିବନି କେବେ ଓକେ ତମେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବା ପାଇଁ କି ମେ ବି ତମେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଜଏନ କରିପାରିବ ଓକେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଗ୍ରୁପ ବାଇ ବାହାର କରିବ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଇଡି ଉପରେ କି ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେମ ରେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ କରିଦେଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଇଡି କୁ ଏଗେନ ତମେ ଜଏନ କରିବ ସେ ମେନ୍ ଟେବଲ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମେ सर ସବୁ ଯାକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଇଡି ସେଟା ମିଳିବ सर जेमती एसक्यूएल रे हमर सब क्वेरी थिले नेस्टेड सब ହୁଁ क्वेरी ହୁଁ 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 सेमिति ହୁଁ एइरे किछि कांसेप्ट अछि सर काहे कि हम एसक्यूएल रे एडा नेस्टेड सब क्वेरी ले करि पारथुली इजीली ହୁଁ 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 ସବକ୍वेरी ତମେ ଏଠି କଣ ମାନେ
कंडीशन ता भीतर दे अप्लाई करिवो सेटा माने सब करी माने कोन जो कोटा कहउछ तमरे सिटी जोटा यूज करछो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन सेटा कथाटा कहउछ ना कोन? नो नो सर नेस्टेड सब करी माने जिंदगी क्वेरी भीतर आउ गोटे क्वेरी हाँ इनर गोटे करी क्वेरी। हाँ हाँ बुझिली से जिनसटा माने तमे या भीतर केमति इंप्लीमेंट करिवो ताको तमे व्हेन कंडीशन भीतर गोटे अप्लाई कर परिबो नले केमति सर अलगा मु एटा बहुत सारा वे अछि। सिटी रे हमें करि सर परिया ना ये जितने सारे एते सिटी रे परियो ना। हाँ हाँ सिटी हे परिबो एटा बट से पाइस पार्क रे करिसेंती पाइस पार्क रे तो से कांसेप्ट नै ना पाइस पार्क रे अलगा अप्रोच अछि बट एसक्यूएल ले देले सिटी बिल डायरेक्टली लिखियो। ओके सर मु एडा सर जदि ମୁଁ एमिति ଗୋଟେ लेखिले मते अलग आछे सर हम्म एक्सपायर वेले गोटे एरर आछे df डॉट रो नम इक्वल्स टू मैक्स ऑफ रो नम जदि मु लेखि दोचे आसुनी सर ना होउनी। ना 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 एटा होबनी df1 तुम फिल्टर तले करूछ तमे ओनली अकाउंटेबल पर जहां भी कॉलम सिलेक्ट करिवो df1 रो तमे df2 करछ दैट इज द प्रॉब्लम है। ओके सर हाँ सेटा होबनी ओके इशू आसु एथरे। डन सर। सर ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋच କରିଛି ସାର୍ ସେ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବି। को आई कैन ସାର୍ ମୁଁ स्टॉप माय ଗୋଟେ स्क्रीन शेयरिंग सर। हाँ स्टॉप कर। शेयर करो। यस सर सर हम्म हम्म ओके ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଛି ସାର୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେକ୍ସଟରୁ ନେଇଥିଲି। करेक्ट। ତାପରେ ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ଏଇଠି ଜଏନ୍ କରିଛି ସାର୍ ତା ସହିତ ଫିଲ୍ଟର ବି କରିଦେଇଛି କରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଡେଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ପକେଇକି ତାପରେ ଏଇଟା ସାର୍ ଗ୍ରୁପ ବାଇ କରିଦେଇଛି। ग्रुप बाय ठीक अछि। ତ ୱିଣ୍ଡୋଜ ଫଙ୍କସନ୍ ଲଗେଇଲି ଆଉ ଡେନ୍ସରେନ୍ ପକେଇକି ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ୱାନ୍ ଅଛି ସେଟା କାଢିଦେଲି। अच्छा तो डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक अछि। ठीक अच्छे अप्रोच ठीक अच्छे समस्त जो कौन काउंट बाहर करो ओके जो काउंट जमी बाहर कर ओके एग्रीगेट ग्रुप बाय काउंट बाहर कर ओके से काउंट ऊपर तुम मैक्सिमम रो बाहर करो ओके नो नीड टू गो दिस डायरेक्टली आम विंडो फंक्शन जब भी यूज करेंगे आम कौन से जो डायरेक्टली काउंट ऊपर ही बाहर कर पारे ना। सर बट एडे जदि डेंस रैंक यूज करिबा तांके पार्टीशन बाय प्रोडक्ट नेम करछन्ती तो सब प्रोडक्ट रो मैक्सिमम आसीबो ना सर गोटे प्रोडक्ट रो मैक्सिमम आसीबो कि सर सब प्रोडक्ट रो मैक्सिमम आसीबो एडे ने जोड़े जोड़े मैक्सिमम सेल अछि। କରିନି। अच्छा तुम जो कहो पार्टीशन बाय अप्लाई करले देन आगे खाली ऑर्डर पे अप्लाई करछन सर ऑर्डर पे अप्लाई करले तो माने गोटे ही आछी पार्टीशन बाय माने ये करना पार्टीशन बाय ऑर्डर। करले हां सर मु कोन गोची सर जेतोळे हमरो एडे मल्टीपल रोच ना सर से केस एडे भूल हे जिवो। मल्टीपल हाँ मल्टीपल वैल्यू थिले तमे सेटा सबले फर्स्ट वैल्यू टा नबो आ कोन
मल्टीपल जदि वैल्यू थिला तमरो सबले कोन एंती रैंक फंक्शन एटा यूज करी कि यू हैव टू फाइंड आउट ओके सर मल्टीपल आउरे वैल्यू। सर ए प्रॉब्लम टा काहे आछे सर रिट्रेस एक्सेस नहीं मे बी एटा मोर भी आसला ओके गोटे जेतले माने क्रिएट होची टेबल टा मल्टीपल टाइम्स एटा एटा तो सेटा बेले आसे ओके तो से टाइम रे कोन करबो ना तमे क्लस्टर को टर्मिनेट करिकि कि रिस्टार्ट कर दो ओके ए टाइम्स रे टिके प्रॉब्लम्स आसुची। ओके तो माने एडा मु काहे टेंशन करतो माने जति दीटा कि तीनटा प्रोडक्ट तीनटा आसला हाँ कर टाइट टाइट थिबो तो सेति पय आसी जबो आउ टॉप प्रोडक्ट खाली काढिबार थिला ना सर टॉप प्रोडक्ट ओटा हाँ सेति पय ठीक আছে थैंक यू ठीक अछि हाँ ओके ठीक अछि आ ओके फाइन ठीक अछि अप्रोच ठीक अछि समस्तंकर एंड राइटिंग इज फाइन ओके जेमति माने कोड को फॉर्मेटिंग करी लिखुछो ओके ऑलवेज ट्राई दैट वन जोटा कि माने फ्यूचर रे कोन हबो ना तळे तमे गोटे प्रॉपर कोड मैनेजमेंट करूछो जेमति तबळे गोटे सपोज तमे कोड को कि देखिबो एंड गोटे टेबल कंटेंट रे जेमति गोटे आम एमती कौन गोटे कंटेंट लिखुचु टेबल कंटेंट डायरेक्टली जाए चेक करुच्ची कि मोर कोडटा कोठी अछि ओके देन मेनू रे तो लाइक दैट सो इट्स अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज कोड ओके सेमती सब ट्राई कर लिखिया ପାଇଁ सो दैट कौन हम ना माने जिते गोटे प्रोजेक्ट काम करिवो कि कौन हम सो दैट यू कैन इजिली यू नो फाइंड आउट जने देखियो जे कि ना 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 ही हैज ऑलरेडी वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट इट्स नॉट लाइक कि एमती माने रैंडमली तमे लिखुचो कोड एंड किछि प्रॉपर्ली फॉर्मेटिंग नहीं ऑर्गेनाइज नहीं ओके तो ए फॉर्मेट सब मेंटेन करो ठीक अछि फाइन ठीक अछि एटा देखिबा हमें ओके तो आज हमें देखिबा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ओके आई थिंक से जो जिनसटा काली हमें पढुथिले राइट स्कीमा इवोल्यूशन एंड स्कीमा एनफोर्समेंट देखिबा ओके एंड विथ दैट आल्सो मु एटा डिस्कस कर देबी जो करप्ट रिकॉर्ड टा ठीक अछि सो आई जस्ट ओपन माय प्री एडिशन ओके सो स्कीमा एनफोर्समेंट सब बोलन के अछि ओके सो बेसिकली स्कीमा एनफोर्समेंट माने तमे तळे गोटे किछि भी डेटा क्रिएट करछो किछि डेटा फ्रेम क्रिएट करछो कि तमे गोटे फाइल को रीड करछो यू आर एनफोर्सिंग द स्कीमा ओके गोटे होची इन्फोर्स स्कीमा माने कोन व्हाट डू यू मीन बाय इन्फोर्स स्कीमा इन्फोर्स स्कीमा में पढिथिले सर ना मन नहीं ऑटोमेटिक एडजस्ट करिवो सर डाटा को नेकी डाटा टाइप्स करेक्ट ओके दैट इज कॉल्ड इन्फोर्स स्कीमा ओके एंड इन्फोर्स स्कीमा इज वेरी वेरी कॉस्टली तो ऑलवेज ट्राई टू यूज सम स्कीमा बेसिकली तबले तमे किछि भी डाटा रीड करछो किछि भी करछो ऑलवेज ट्राई टू रीड सम माने स्कीमा टा को मेंटेन करिया को ट्राई करो ओके सो सेई जो स्कीमा को हमें गोटे माने कोन तबले डेटा हमें गोटे क्रिएट करूछे फर्स्ट कोन करूछे हमें स्कीमा गोटे क्रिएट करूछे देन ताको रीड करला बेले हमें स्कीमा दोछे राइट सो दैट इज कॉल्ड a schema enforcement so you are enforcing your schema to read that data frame correct to read that file or create the data frame so that is called schema enforcement तो स्कीमा एनफोर्समेंट होची हमें तो गोटे स्कीमा जल गोटे फाइल को रीड करूचे मे बी गोटे टेबल को रीड करूचे और मे बी हमें गोटे डाटा फ्रेम को क्रिएट करूचे मैनुअल डाटा फ्रेम जेतेबेले हमें क्रिएट करूचे तो कोन होचे हमें गोटे स्कीमा को एनफोर्स करूचे राइट दैट इज कॉल्ड अ स्कीमा एनफोर्समेंट तो बुझेला व्हाट इज द स्कीमा एनफोर्समेंट ना बुझेलानी सर बुझेला समस्त तो ना डाउट्स अछि हेलो यस सर बिल्कुल ओके ओके फाइन तो हमें एठी कोन करिबा ओके रीड करछि दैट इज फाइन so I'll just try with okay schema evolution schema enforcement तो schema enforcement हमें देखिबा okay I'll just try to like schema enforcement
ओके एटा इंटरव्यू क्वेश्चन एटा आसे सब बोले व्हाट इज स्कीमा एनफोर्समेंट व्हाट इज स्कीमा एवोल्यूशन ओके सो व्हाट यू हैव टू डू so basically schema enforcement कौन and schema evolution कौन so in schema enforcement suppose ମୁଁ ଗୋଟେ schema first create କରୁଛି basics names create କରିଛି କି I'll just copy that one ନହେଲେ ଏଟା time ଲାଗିବ okay I think I have right hmm no my name is address okay let me copy this one this address okay I'll just remove this one address number ଅଛି string type okay okay so this is called a schema enforcement जोटा हमें schema गोटे create कल जैसा नहीं हमें normally गोटे schema create करिबा okay we'll create a schema right then हमें कौन करिबा ना एठी we will create a data frame okay so spark dot create data frame okay schema enforcement रो कौन problems हमर होची माने कौन benefits होची I'll show you I'll just create some data like a name I can say this then id I'll be taking okay then anything I can write okay similar way I'll be writing another record then another record okay okay so I'll be displaying that one okay देखिए ओके से कौन जेटा error invalid okay so directly error ही पड़ा आसुची एठी ओके सो दिस इज बिकॉज लाइक आम जो क्रिएट करुचे आम स्कीमा गोटे दौचे देन से कौन कर ना सेम स्कीमार डेटा को से इनपुट करुचे जदि मुझे स्कीमा देबिनी ओके लाइक ये जो माने ये जो डेटा टाइप्स मेंशन करिविनी से एनी काइंड ऑफ डेटा इट कैन टेक ओके जेमती आम क्रिएट टेबल करुचे तो गोटे स्कीमा देले कौन होचे हमर सेही डेटा टाइप रे से कॉलम रे सेही डेटा टाइप टा आम इंसर्ट होउनी देन अलग डेटा टाइप टा इंसर्ट होउची देन से एरर थ्रो करुची right similar to that that is called schema enforcement ame gote table रे data insert करूचे we are first declaring our schema based on that schema ame कोन करछु ना को से schema अनुसार ame ताको insert करछु कि ताको update करछु कि ताको data टा जहां भी ame load करछु okay so that is why we are using this schema enforcement so schema enforcement is very important ए गोटे concept जोटा कि ame schema को enforce करछु while reading a file or while writing a file also ओके राइट फाइल राइट कला बेले भी हमें से स्कीमा यूज करछु कि माय फाइल विल बी रिटन टू दिस टेबल बेस्ड ऑन दिस स्कीमा ओके सपोज मु कोन करबी कि जदि मु ट्राई करबी एको फाइल को रीड करिया पई भी ओके so I'll just taking the file this is okay मु df करछि ओके मु df करछि df dot display okay df dot display
then okay. Then I so ମତେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ନବାକୁ ପଡେ. I'll be creating one file. So catalog I'll be taking name is address. Let's see. Okay. CSV, CSV. Why it is not in CSV? CSS. Okay. Mm, okay, that is fine. So mତେ ଏଟା upload କରିବି ର just a minute. I'll just upload into that file and try to read it. Yes, default. I created a volume and test practice. And just go to volume and just try to record data. Hmm. Hmm. Okay. Spark dot csv. Okay. ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖେଇବି, okay, it can read header is equal to true. Good. Okay. Then I need to mention here um, permissive, right?
corrupt record column. I need to do one thing. Error record I'll be taking, and string type is fine. Okay, I don't remember the column. Let me check. It should be the column. Column name of corrupt record. Okay, column name of corrupt record. Error record, right? Error rec. Okay. Okay. So basically, let me. Okay. So किसी कौन कला ना मते सबु जाक record मते error दिखे दला. Okay. So it gave me all the records of age रो सबु जाक record because of this record. Okay. So think what we have to do is this is fine. More permissive is fine, but you need to create. Okay. Okay. So basically से कौन करुछि ना मते ये जो record टा आसिला because of that it is simply converting that one. Converting सबु जाक record जहाँ भी अच्छी से मते error out कर दो ची. But maybe but अगर remove कर देबी let's see. Still it is giving me. Okay, why error record कहाँ रह गया कौन? Okay, schema. तो से जत्तो बड़े तमर भी किसी भी डेटा तमर कौन हो ची कि माने इंटीजर आसुनी. ओके माने सपोज डेटा टाइप रे चेंजेस आसुची से केसेस से यदि नल आसिला सपोज तुम डेटा को रीड करूछ एंड तम स्कीमा अनुसार से वैल्यूज टा नल आसुची माने से वैल्यू को से ताको पार्स करि पारुने. सो इन दैट केस से गुडा को तमर एरर रिकॉर्ड रे कैप्चर हो जिवो जे तुम सेम जिंस तुम ताको माने ये कल. ओके तो एज रेट कौन सब नल हो जाउची माने कौन से जो डेटा गुडा को से कौन करछि ना इंटीजर टाइप रे ताको पार्स करि पारुनी. ओके सो दैट इज व्हाई इट इज गिविंग एज अ इंटीजर एज अ माने तार प्रॉब्लम आसुची. ओके मोदी फ्लोट टाइप लिखिबी देखिए फ्लोट टाइप जहाँ हेले भी सेटा आसीबो. ओके जहाँ हेले भी ए टाइप रे एरर आसीबो. नो एक्चुअली फ्लोट टाइप रे आसीलानी. Okay so now what will I do? I'll just try to add that one. I think you will be getting the correct output. ठीक अछि एबे बुझी हला अश्विन. Yes, sir. ओके सो एरर रिकॉर्ड केतेबेले आसीबो जेतेबेले देयर इज अ डेटा टाइप मिसमैच. तमरो डेटा गोटे टाइप रो अछि बट तमे ताको डिफाइन करछो से टेबल पे इट्स अ डिफरेंट डेटा टाइप. मु को करे स्कीमा देली so there will be schema mismatch. I have given the schema age as a integer. Okay the schema of the age is integer but the value टा मैं insert करछि that is a different data. तो सी कौन कला ना याकू से पार्स कर परलन बेसिकली सी कौन करछि ए जो डाटा अनुसार
से स्कीमा जो कोन स्कीमा जहां में असाइन करछु से स्कीमा अनुसार डाटा को पार्स करछु। तो इंटीजर यदि स्ट्रिंग रे अछि देन वी कैन पार्स टू द इंटीजर। बट यदि स्ट्रिंग टा अछि स्ट्रिंग को हमें केमते इंटीजर करते राइट, दैट वी कैन नॉट डू दैट। तो सेगुड़ा सब हम एरर आउट हेगला एंड वी कैन कैप्चर इट थ्रू द एरर। सर आखिर ଆପଣଙ୍କର null କାହିଁକି ଆସୁଥିଲା sir ଏଇ ଯୋଉ ନଲ୍ ଆସୁଥିଲା ମେ ବି ଇଣ୍ଟିଜର ଟାଇପ ରେ ସେ କନଭର୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଫ୍ଲୋଟ ଟାଇପ ଦେଲି ତ ସେ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିଲା। ଓକେ, ଏ ଯୋଉ ଫ୍ଲୋଟ ଟାଇପ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ମୁଁ ତ ସେ କ୍ୟାପଚର କରିଦେଲା ତାକୁ। ଓକେ, sir but ଆପଣ ତ 34 38 ମାନେ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଏଟା କେତେ 20 ଏଇ ରେକର୍ଡଟା ଦେଇଛି ନା 2843। ଓକେ 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 ଏଟା ଠିକ ହଉଛି ଅଛି। ମୁଁ କ୍ରିଏଟ କରିଥିଲି। so this is the way ତମେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଡାଟା କୁ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର କରିବ। ଓକେ, जो स्कीमा ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କିମା ଇଭାଲୁଏସନ। this is called schema ସ୍କିମା enforcement। ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। okay, ସ୍କିମା what is ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। enforcement? okay, so term ଟା ମନେ ରଖିଥା କାହିଁକି ନା ଟର୍ମ ଗୁଡାକ ହିଁ इंटरव्यू रे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे। ओके, स्कीमा एनफोर्समेंट इट लुक्स लाइक इज अ बिग थिंग। ओके, एटा कंप्लीटली सिंपल जोटा कि हमें क्रिएट टेबल रे करूछो, टेबल को डाटा टाइप क्रिएट करला पर ताको इंसर्ट करूछो। सेम जिंस एठी हमें करूछो, फर्स्ट स्कीमा क्रिएट करूछो, कॉलम नेम तार डाटा टाइप, देन तमे रीड करूछो कि तबे क्रिएट भी करूछो जहां भी करूछो। ओके, सेम जिंस हम करूछो, किछि डिफरेंट नहीं। ओके, दैट इज कॉल्ड स्कीमा एनफोर्समेंट कि विदाउट यूजिंग इन्फर स्कीमा आमे डायरेक्टली स्कीमा को इनिशियली कोन करछु ना आमे स्कीमा क्रिएट कर दिले, माने स्कीमा एनफोर्समेंट रे कहू जे सेम कॉलम रे आमे स्कीमा टा फर्स्ट क्रिएट कर दिले, देन से ई जो डाटा को गोटे डाटा फ्रेम को इंसर्ट कर जो रिकॉर्ड हैला ताको इंसर्ट करले बेस्ड ऑन दिस डाटा टाइप। तो डाटा टाइप टा हमर डिफॉल्ट आसीबन, डाटा टाइप टा हमर जहां स्कीमा क्रिएट करछे से अनुसार आसी। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ स्कीमा एनफोर्समेंट। ओके, and next we will talk about what is schema evolution, जोटा कि हम कहिथिले ए दिटा होची schema evolution पे एटा यूज होची। ओके, सिनेरियो कोन, सपोज मोर डेटाटा अछि। ओके, मते एति नेम एज एड्रेस अछि, ए डाटाटा अछि, मु सबले कोन करले ना ए डाटा को नेली मु गोटे टेबल को राइट करली। ओके, आज तीनटा रेकॉर्ड आसिला मु टेबल को राइट राइट करली, अगेन काली मोर पाइपलाइन टा रन हला, काली आउ तीनटा रेकॉर्ड आसिला मु ताको टेबल को राइट करली, परदिन कौन है ना आउ तीनटा रेकर्ड्स आसिला ताकू मोर राइट करी, बट से तीनटा रेकर्ड जेला आसिला लाइक आफ्टर माने 3 दिन पर जो रेकर्ड टा मोर आसिला। ओके, सेतेबेले कोन होची ना ई कॉलम सहित मोर गोटे जेंडर कॉलम ऐड हेके आसिला। ओके, डाटा डाटा आसे माने देयर इज नो कांस्टेंट लाइक हमर ई कॉलम डाटा आसीबो कि से डाटा आसीबो। ओके, वी कैन नॉट से दैट। सो से केसेस रे कोन होची ना जेंडर कॉलम टा हमर आसिला, बट जेहेतु आमे ऑलरेडी आमे गोटे डाटा कोन अपेंड करूचे, सेम डाटा को सब दिन आमे लोड करूचे कोन अपेंड अपेंड करी जाउचे, तो सी एतल सेम जिंस के सेम स्कीमा रे अपेंड करे ट्राई करला, से कोन को देखिला कि स्कीमा टा ऑलरेडी अलगा किछि अछि, माने जो न्यूवा कॉलम टा हमर अपेंड करूछु से कॉलम टा अवेलेबल नाही को टेबल रे, राइट। सो सी सेतले कोन करिवो ना सेतले से कंफ्यूज हे जिवो एंड एटा गोटे एरर थ्रो करिवो कि अनेबल टू फाइंड आउट द स्कीमा। ओके, और स्कीमा मिसमैच लाइक दैट ए सब जिंस तमरो आसीबो इशू आसीबो। तो से केसे तमे तो केमती हैंडल को, दैट इज कॉल्ड स्कीमा इवोल्यूशन। स्कीमा इवोल्यूशन मींस changing of schema. It may be you are in adding some new columns or maybe you are dropping some new columns, so that is called schema evolution. So जेतेबेले तमे गोटे राइट करछो गोटे टेबल को कि गोटे फाइल को, तो तम स्कीमा इवोल्यूशन होची, तो ताकू तमे केमिति हैंडल करियो बाय यूजिंग दिस टू ऑप्शंस। आइदर यू कैन यूज मर्ज स्कीमा। सो मर्ज स्कीमा टा केतेबेले यूज हे तमरो जेतेबेले तम न्यू कॉलम टा ऐड हेके, सपोज यू आर चेंजिंग सम कॉलम्स, डायरेक्टली कॉलम चेंज करछो, कॉलम नेम चेंज करछो, एडिंग ए न्यू कॉलम और ड्रॉपिंग ए कॉलम। सो इन दोस टू केसेस हमें यूज करछु मर्ज स्कीमा। बेसिकली हमें स्कीमा मर्ज कर दोचे, सो दैट कोन हबना जहां भी नुवा कॉलम से हमरो करंट डेटा रे आसिला दैट विल बी मर्ज, सेई वैल्यू टा हमरो अपेंड हे जिवो एंड सेई कॉलम पय प्रीवियस वैल्यू गुडा सब नल हे जिवो। ओके, बुझी हला एटा व्हाट इज मर्ज स्कीमा। सर क्या उधर कोई हम्म,
I'll just tell you. Okay, df ହେଇଗଲା. So what will I do? I'll just df dot write dot delta format ହେଇଗଲା. I'll just remove the format. Okay. Bad record data no. I'll just try to use like the employees. Okay, what's this depot employees? It maybe student. Okay. Okay. ठीक ଅଛି ମୋଟା ଏଟାକୁ କଣ ରାଇଟ୍ କରଲି ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରେ ଓକେ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ରିଫ୍ରେଶ ଦିସ୍ वन ମୋର ଏଠି କଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଡାଟାଟା ऑलरेडी क्रिएट ହେଇଯିବ ओके ओके स्टूडेंट रे मोर क्रिएट ହେଇଗଲା राइट तो नाउ मु कोन करिवे ना आज आउ गोटे डाटा को सेम डाटा को लोड करिवि बट दैट विल बी स्लाइटली डिफरेंट ओके तो मु एठी कोन करली कि एठी एंड सेम जिंस मु यूज करिवे एठी स्कीमा को नेली ओके स्कीमा न्यू करली एंड आई विल जेंडर करली ओके मे बी स्ट्रिंग टाइप नहीं पारे बुलियन टाइप नहीं पारे डजंट मैटर ओके स्कीमा न्यू करली ओके स्कीमा न्यू करली एंड ओ ओके बैट record files ओके ओके फाइन मोटा क्रिएट कर दोची गोटे नॉट अबाउट डेटा फ्रेम अरे हाँ तो भूल कर चिट I have to keep it inside this fine okay fine तो now what will I do I'll just write the same thing मु जहाँ भी एठी करली सेम थिंग मु कोन करिया को ट्राई करिवि कि सेम टेबल को राइट करिया को मु ट्राई करछि ओके 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 तो एबे कोन मोर एरर आसिला कि स्कीमा मिसमैच डिटेक्टेड व्हेन राइटिंग ए डेल्टा टेबल तो कोन पे स्कीमा मिसमैच आसिला बिकॉज़ मोर गोटे स्कीमा ऐड हे कि आसी ओके जेंडर स्कीमा जोटा कि से आइडेंटिफाई करि पारनी कि जेंडर स्कीमाटा सको मिलुनी ठीक अछि बिकॉज़ सेम टेबल को मु ट्राई करछि अपेंड करिया पे सेम टेबल को मु राइट करिया पे ट्राई करछि ए डाटा फ्रेम टाको सेम टेबल को राइट करछि बट ए डाटा फ्रेम रे मोर न्यू गोटे कॉलम्स आछि बट आई नीड दैट कॉलम इन द डाटा गोटे मोर मते टेबल रे डाटाटा दरकार
तो मुझे केमिति चेंज करी केमिति ऐड करी दैट इज दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड एज अ स्कीमा इवोल्यूशन किछि भी तुम डाटा कर सेम टेबल रे यूज करछो बट किछि भी तुम न्यू कॉलम ऐड करछो गोटे टाइप रे सपोज कस्टमर गोटे रिक्वायरमेंट आसिला ओके तमे ऑलरेडी गोटे मास डाटा लोड कर देछो बट करेंटली कस्टमर गोटे रिक्वायरमेंट ले नो नो आई नीड द डाटा ए कॉलम टा मोर ऐड हबा दरकार सो हाउ यू आर गोइंग टू चेंज इट सो यू कैन इम्प्लीमेंट द स्कीमा इवोल्यूशन ओके जोटा कि हिस्ट्री डाटा सहित तमरो मर्ज हे जिवो बेसिकली तो ସେଥିପାଇଁ ତମେ ୟୁଜ କରୁଛ ମର୍ଜ ସ୍କିମା ଟ୍ରୁ ଅର୍ वी कैन से दैट ओवरराइड स्कीमा ट्रू भी तमे यूज कर परियो बट फॉर नाउ यू हैव टू यूज मर्ज स्कीमा देखो एरर देखो तुमको ऑप्शन भी दे दूची एठी टू एनेबल स्कीमा माइग्रेशन यूजिंग डेटा फ्रेम राइटर और डेटा स्ट्रीम राइटर प्लीज सेट ऑप्शन एज अ मर्ज स्कीमा ट्रू ठीक अछि सो आई विल अप्लाई दिस वन देन इट विल गिव मी द करेक्ट आउटपुट ओके लेट मी रन इट हे गला तो दिस concept is called as a schema evolution any schema changes is happening and you are trying to load that data frame into the target table that is called as a schema evolution but you have to give this option or else it will throw an error this new schema achi it will give you an error okay जदि same schema achi okay तमे मोर एटा नाही सर फर्स्ट मोर स्कीमा बुझ परला कि देन आई विल गो टू द ओवरराइड स्कीमा सर मर्ज स्कीम बुझा पड़ा बट जदि अगर प्रीवियस जो डाटा थिबो ना सर सेडे तो नथिबो जेंडर कॉलम तो से केस रे प्रीवियस डाटा कोन हबो सर नन नल नन हे हेजिबो जिवो ना नल हे जिवो ना देखो एठी नल हे जिवो हम एठी चेक करबा ना हम चेक कहीं करिया देखो एठी नल हे जिवो सब ओके करंट रिकॉर्ड टा कोटा करथिली मु आई थिंक 43 दिस वन राइट हां दिस वन एबे करथिली मु 43 42 सॉरी या दिस वन हे गला यस सर जेंडर कमल एफ ला आ सब जाक नल अछि ओके तो यस एटा सबले स्कीमा इवोल्यूशन टा तमर दरकार बिकॉज़ यू डोंट नो केबे मोर कोन रिक्वायरमेंट आस करे ओके सो बेटर तमे एटा मर्ज स्कीमा यूज करिवो एंड ओवरराइड स्कीमा केते बेले यूज करिवो जत्ते बेले तमर गोटे डेटा टाइप टा चेंज होउची सपोज गोटे कॉलम रो डेटा टाइप आगुर अलगा अछि बट रिसेंट करंट डेटा रे तमे डेटा टाइप टा चेंज करछो ताको सपोज तमे डेसिमल 10,2 अछि तमे ताको 12,2 करछो कि 15,2 करछो तो से केसेस रे कोन हबो तमर डेटा टा कोन हबो डेफिनेटली गोटे डिफरेंट डेटा टाइप तमरो कन्वर्ट हे जिवो तो से केस रे कोन तम एरर आसीबो ओके तो से केस तो मतलब एरर आसीबो तमे हेटी कोन करबो ओवरराइड स्कीमा करबो ओवरराइड स्कीमा माने सेम स्कीमा थिबो बट द डेटा टाइप्स विल बी ओवररिटन दैट्स इट डेटा टाइप तमर सेम रहइबो बट डेटा माने कोन कॉलम टा सेम रहइबो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रहइबो बट डेटा टाइप टा तमरो ओवररिटन हे जिवो बुझेला ना बुझेलानी सर डेटा टाइप जो ओवर रिटर्न होती था थिबा डाटा जो थिबा एग्जिस्टिंग डाटा जो ଅଛି ସେଟା ତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି हाँ सेटा तो इम्पैक्ट पड़िबो सेटा इम्पैक्ट पड़िबो बट किछि केसेस रे दरकार पड़ुची तो कोन करि परिबो यू हैव टू डू दैट ओके ସେ डाटा जो कोन हबो सर एग्जिस्टिंग डाटा हाँ सेटा डाटा चेंज हे जिवो ना ओवरराइट ना ना करूଛ सर ମାନେ ନାଇଁ 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 लेट्स ସେ से जदि ହୁଁ हाँ ହୁଁ कोन सर ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଓଭରରାଇଟ୍ ସ୍କିମା ଯଦି ତମର ହବ ତ ଓଭରରାଇଟ୍ ସ୍କିମା ସେଥିପାଇଁ କରୁଛ ନା ଏ ରାଇଟ୍ ରେ ଯାହା ବି କରୁଛ ୟୁ ଆର ଓଭର ରାଇଟିଂ ଦ ସ୍କିମା ଯାହା ବି ସ୍କିମା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଏଇ ଟେବଲ ରେ ଅଛି ସେଟା ତମେ ଓଭର ରାଇଟ୍ କରିଦଉଛ ମାନେ ଅଲରେଡି ଡେଟା ଟାଇପ କୁ ତମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ ତାକୁ ଓକେ ତ ସେଇ ଡାଟା ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ तो जदि आमे जेंडर जदि आगे कैरेक्टर थिबो स्ट्रिंग थिबो ताको जदि ହୁଁ इंटीजर करियले सेटा तो हबो कि सर ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କେସେସ୍ ରେ କଣ हबो कि जोटा हाँ पॉसिबल सेटा ना मुझे हाँ ନାଇଁ ସେ पॉसिबल केसेस रे केमती हबो सेटा ମାନେ ସେଟା ତ डाटा लोड ही हबनी तमर कन्वर्ट ही कर परिबो ना जोटा पार्सिंग हे पारु जेमति ମୁଁ एग्जांपल देली डेसिमल 10 2 अछि ओके बट हमर डाटा आस्थिला सपोज 15 2 सो आमे कहबे नै मते कन्वर्ट करियर अछि तो डेफिनेटली तमे को 15 2 करले भी ता भीतर 10 2 डाटा रही परिबो राइट बट 10 2 यस थिला सर जति हमर तो सेई के ई केसेस गुडा रहउची सपोज हमर गोटे फॉर्मेटिंग ता डेट फॉर्मेटिंग ता किछि रहउची किछि रहउची तो एडा सब दरकार ना तमरो तो सेई केसेस यस ओके अंडरस्टूड Sir, number of columns will be matched in this case. हम्म
ନମ୍ବର ଅଫ କଲମ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବନି ଯେତେବେଳେ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାର ଅଛି କି? ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବନି then କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ନେମ୍ ଏଜ୍ ଆଡ୍ରେସ କୁ append କରିବି ହଁ ତ ଜେଣ୍ଡର ଏରର ରେଟେଡ ନଲ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ ମାନେ ନଲ୍ ହେଇ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ରନ ରେ ତ। ନାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି append କରୁନି କି ସେ ହୁଁ। append ମାନେ କଣ ତ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଓଭର ରିଟର୍ନ ହବ ନା ଯାହା ବି ହଁ କହିବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ ରେ ସେ ଆପେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଖାଲି ସେଠି ନେମ୍ ଏଜ୍ ଆଡ୍ରେସ କୁ ଦେବି ଆଉ ହୁଁ, ଜେଣ୍ଡର ଏରର ରେକର୍ଡ ଦେବିନି, ହଁ ଦେନ୍ କଣ ହେବ ସେ? ସେଥିରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ରାଇଟରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେ ପୁଣି ତମ ୱାର୍କ ସ୍କିମା ଟ୍ରୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ତମର ଅଲରେଡି ଏଇ 5ଟା କଲମ ଅଛି, ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛି କି ମୋର 5ଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଦରକାର। ଓକେ ତ ନଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ ସେ ହଁ value। ନଲ୍ ନଲ୍ ଏଣ୍ଟର ନାହିଁ, ସେମିତି ହବନି, ନଲ୍ ଏଣ୍ଟର ହବନି। ତମକୁ ସେଟା ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ମାନେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମିନ୍ସ ଆଇଦର ତମକୁ 5ଟା କଲମ ମାନେ ଏଇ 2ଟା କଲମ ଆଡ କରିକି ନଲ୍ ଦବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତମକୁ ମର୍ଜ ସ୍କିମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ଏଟା କଣ ଆସୁଛି ଏରର ଦେଖିବା। ଓକେ ଏଇଟା ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ଯୋଉଟା କହିଲ। ଓକେ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଟ୍ରାଏ କର ଏଟା। ମାନେ ଏବେ 2ଟା ରେକର୍ଡ ଆମେ କଲେ, ନେକ୍ସଟ ରେକର୍ଡରେ କଣ କରିବ ନା ଓନଲି ୟୁ ହାଭ ଟୁ କିପ୍ ନେମ୍ ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ୍ରେସ। ଓକେ ଦେନ୍ କଣ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ତମେ ଟ୍ରାଏ କର, 3 ଥର କରିବ। ଫାଷ୍ଟ କରିବ ଗୋଟେ ନେମ୍ ଏଜ୍ ଆଡ୍ରେସ ରେକର୍ଡ ନେଇଗଲ, ତାପରେ ମୁଁ ନେଇଛି କଣ ଜେଣ୍ଡର ଆଡ୍ କରିଛି, ନେକ୍ସଟ ରେକର୍ଡରେ ଏ 2ଟାକୁ ତମେ ରିମୁଭ୍ କରିଦବ, ଓନଲି ଏଇ 3ଟା ରେକର୍ଡକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଆପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ ଲେଟ୍ସ ସି ତମ ଡାଟାଟା କଣ ଆସୁଛି। ଓକେ ଆଉ କାହାର ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି? merge schema override schema, because later this is the most important interview question. Okay schema evolution and schema enforcement term टाକୁ मन रख काइना term is very very important। समस्त क्लियर तो evolution and schema enforcement? Yes, sir. Okay 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 fine, then ଆମର almost spark over। okay तो मोस्टली आम डेटाब्रिक्स स्टार्ट करवा एबे डेटाब्रिक्स रो कांसेप्ट जोटा कि मेन कांसेप्ट होची डेल्टा टेबल। ठीक अछि तो टिल्ला आमे जहाँ भी पढ़िथिले दैट इज स्पार्क। स्पार्क कोन कहथि दैट्स द इंजन। स्पार्क इंजन आमे कोन करथे डेटा प्रोसेसिंग पे यूज करथे। ओके बट ए जो कोड को रन करिया पे वी नीड ए प्लेटफॉर्म एंड जो हमर डाटा को स्टोर करिया पे वी नीड ए स्टोरेज। ओके तो स्टोरेज जो प्लेटफॉर्म में यूज करछु जो टेबल फॉर्मेट दैट इज कॉल्ड डेल्टा टेबल। ओके एंड डेल्टा टेबल होची डिफॉल्ट फॉर्मेट। डेल्टा टेबल टा होची हमर डिफॉल्ट फॉर्मेट ऑफ द डेटाब्रिक्स। डेटाब्रिक्स रो डिफॉल्ट फॉर्मेट होची डेल्टा टेबल एंड ए डेल्टा टेबल रे कोन होचे देयर आर लाइक लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर। ओके डेल्टा टेबल रे केमती डेल्टा टेबल रे हमें बहुत सारे जिंस जेमती कहयो गले कि हमर हिस्ट्री टा को मेंटेन करि पारुछे। ओके एंड लार्ज डेटा को हमें भी स्केलिंग करि पारुछे, देन हमें कोन करि पारुछे लाइक दे जो ओवरराइड स्कीमा मर्ज स्कीमा ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग हमें डेल्टा टेबल हैंडल करि पारुछे। ओके देयर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस। स्केलेबल मेटाडाटा हैंडलिंग जेमती कहली स्केलेबल मेटाडाटा हैंडलिंग व्हाट डज इट मीन सेम जोटा मु कहली स्कीमा इवोल्यूशन जोटा जिंसटा। ओके अलग केसेस रे कोन होता है जदि हमें किछि भी चेंजेस करले हम कोन करिया पड़ुतला अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग हमको क्रिएटेड रिप्लेस टेबल करिया पड़ुतला सब जाक कॉलम को ऐड करिकि वी हैव टू डू दैट। बट हियर वी कैन समहाउ वी कैन रिड्यूस दैट हेडेक कि हमें ताको कोन सेम जिंस रे हमें ताको मर्ज कर परिबा। ओके और एल्स वी कैन ओवरराइट आल्सो। ठीक अछि सो दिस इज द वन थिंग एंड द एबिलिटी टू हैंडल बोथ बैच एंड स्ट्रीमिंग डेटा। सो डेल्टा टेबल हैज द कैपेसिटी to handle both batch data and streaming data। Okay and it is essentially a managed table using databricks the delta optimistic concurrency control using data integrity all new tables databricks are delta table by default। so एठी जो मु कली एठी मु किछि फॉर्मेट देछि किछि देनी तो मु यदि किछि फॉर्मेट दउनी बाय डिफॉल्ट इज ए डेल्टा टेबल। ओके एंड डेल्टा टेबल माने कि एमती भाबने कि इट्स ओनली टेबल। ओके तमे गोटे पाथ भी दे परिबो सेठी भी डेल्टा टेबल गोटे क्रिएट हे परिबो। ओके सो डेल्टा टेबल इज नॉट ना आम भावुचे तो डेल्टा टेबल टेबल माने हमर डाटाबेस टा भले रहउछ। ओके डोंट थिंक लाइक दैट डेल्टा टेबल रे हमर मे बी हमें टेबल रे रखि परिबा मुझे एक पाथ भी देबी वी कैन राइट इनटू द पाथ आल्सो। ओके इट्स नॉट एन इश्यू बुझियला ए जिंसटा मन रखिथा डेल्टा टेबल इज नॉट ए टेबल। आमे खाली एमती नहीं कि खाली टेबल रे डाटा स्टोर करिबा नो वी कैन स्टोर द डेटा इन ए फाइल फॉर्मेट जेमती कहली सेमती भी रखि परिबा एंड डेल्टा टेबल रो फाइल फॉर्मेट होची कोन होची पार्के फाइल। ओके आई विल शो यू मोटा ऑलरेडी करथिली। ओके
सो इफ विल सी एटा तो हम डेल्टा टेबल ठीक अछि इट्स अ डेल्टा टेबल बाय डिफॉल्ट जहां भी हला एटी डेल्टा टेबल बट जदि हम कहबा मु गोटे फाइल फॉर्मेट रे गोटे पाथ देकी सेठी स्टोर करबी यू कैन राइट दैट सो बेसिकली मु प्रीवियस सेशन रे देखैतिली अलगा बैच पिलांको ओके सो एठी देखिबो टारगेट डेटा ओके दिस इज अ डेल्टा टेबल सी मु जले ओपन करूची so this is a delta table basically ओके कहीं कि ना देखो मुझे डिटेल्स रे जीवी मे बी एठी लिखा हेतिबो मैनेज्ड नो वॉल्यूम टाइप इज मैनेज्ड फाइल्स होची हमर एटा परमिशंस ओके नो so if I'll go here देखो केमिति गोटे आइडेंटिफाई करियो को टेबल टा डेल्टा टेबल सो इफ गोटे डेल्टा लॉग जे तमरो क्रिएट होची त राइट कला बेले दैट इज कॉल्ड अ डेल्टा टेबल ओके सपोज मु एठी कोन करबी कि आई विल जस्ट ट्राई टू क्रिएट अनदर ओके सो सेम डीएफ न्यू टा ओके मु एठी कोन करबी कि नै मते डीएफ न्यू नु एटा जो करची कोड कला डीएफ राइट एटा करची ना ओके तो मु एटा कोन करबी कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मु एटा कोन करची गोटे फाइल फॉर्मेट रे लिखुची ओके तो मु आपको एमती लिखिबि एटा टेबल हे गेला गोटे टेबल लिखिबि गोटे फाइल फॉर्मेट रे लिखिबि तो फाइल फॉर्मेट रे केमती लिखिबि आई विल जस्ट कॉपी दिस वन मु ए पाथ टाको कॉपी कर दोची टारगेट डेटा जो अछि एटा कॉपी पाथ करली ओके आई विल जस्ट कीपिंग दिस वन एंड मु चेंज कर देबे एटा टारगेट डेटा लिखिबिनी मु कोन लिखिबि एटा मोर स्टूडेंट डेटा अछि राइट स्टूडेंट सपोज स्टूडेंट डिटेल्स ओके ठीक अछि एमती रखिदेली मोर किछि माने अलगा किछि फॉर्मेट रे लिखियार नै किछि करियार नै आई विल जस्ट राइट इन दिस वे ठीक अछि आई विल जस्ट एग्जीक्यूट इट सिंटैक्स ओके 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 सेठी दे दोछि हां for syntax at this student details more to append है कला df.write format part syntax error okay diagnose error करो देखो कौन आछे test practice student details oh sorry I think I did a mistake I'm जान पहले टा कौन आछो it should be save okay now it is fine okay fine एटा सेव एज टेबल मु करथिली टेबल फॉर्मेट रे रखिया पई बट एटा बे सेव करले दि पाथ दोचो यू हैव टू गिव सेव ओके एबे हे गला डेल्टा फॉर्मेट रे रहि गला मु गोटे डेल्टा टेबल क्रिएट करली बट ये गोटे टेबल नुहे बेसिकली एथरे कोन होची ना फाइल टा गोटे फॉर्मेटिंग रे रहउची सो आई विल गो हियर एंड चेक देखो डाटा टा के बुझियो ट्राई करो डाटा केमती रहउची ओके आई विल जस्ट रिफ्रेश इट ओके स्टूडेंट डिटेल्स गॉट क्रिएटेड
बट एटा होछ हमर डेल्टा टेबल कोन पाइ ना आ भीतर गोटे डेल्टा लॉग क्रिएट हेइथिबो you can see that गोटे डेल्टा लॉग क्रिएट हेइछि यदि हमर गोटे डेल्टा लॉग क्रिएट हेइछि then you can assume that you can not assume you can confirm that it's a delta table डेल्टा लॉग केवल डेल्टा टेबल रे क्रिएट हबो एंड हमर जेतेबेले फाइल टा राइट हबो इट शुड बी इन दिस पार्ट फॉर्मेट ओके ये हमर केतेबेले भी हमर देखो पार्क फॉर्मेट रहला ए कोन आछि देखो कोन लिखा हेछि पार्ट 000 गोटे एड्रेस डॉट स्नैपी डॉट पार्क फाइल तो डेल्टा टेबल रे हमर फाइल टा रहउछि हेडा होछि पार्क फॉर्मेट रे बट ए जो कंबाइन ए जो सब जाको कंबाइन कर देले दैट बिकम ए डेल्टा टेबल हो गेला सो इट्स नॉट लाइक डेल्टा टेबल मींस गोटे टेबल रे हम स्टोर कर पारे वी कैन स्टोर इट इन द फाइल फॉर्मेट एज वेल माने वॉल्यूम टा हमर ओनली यूज होछि फाइल पई तो हम गोटे फाइल रे भी रख परिबा इट्स नॉट एन इश्यू वी कैन स्टोर दैट इनटू ए फाइल एज वेल एटा बुझियला व्हाट इज द डेल्टा टेबल Yes, sir. ओके यदि तुम किए पचारे कि इंटरव्यू रे लाइक व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ डेल्टा टेबल व्हाट आर द अदर फोल्डर्स यू आर सीइंग इनसाइड अ डेल्टा टेबल सो यू कैन से दैट देयर शुड बी अ डेल्टा लॉग गोटे हमर जो डेल्टा लॉग रहउची देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ डेल्टा टेबल एंड ए डेल्टा लॉग रे कोन अछि सब डिटेल्स लाइक हमर जहां भी चेंजेस अछि सब जगह जेसन एंड सीआरसी फाइल ए दिटा फाइल हमर क्रिएट होची एंड ए फाइल जेते थर तमे गोटे डेटा को गोटे ये को माने राइट करिवो कि अपेंड करिवो किछि भी करिवो से सेतेटा जेसन एंड सीआरसी फाइल क्रिएट करिवो ओके एबे गोटे अछि सपोज मु आउ थरे राइट करबी सेम जिंसो ओके सेम जिंसो मु एठी कर देली ओके डीएफ जो न्यू अछि ना आउ थरे मु एटा को फाइल रे करिवि सपोज ओके न्यू करली डेल्टा कर देली एंड सेम जिंसो मु एठी कर देली ओके ऑप्शन मर्ज स्कीमा में भी करिया पड़बो मते ओके ठीक अछि हे गेला ako रिफ्रेश करबी देखो आ गोटे सीआरसी एंड आ गोटे जेसन फाइल क्रिएट हे जाइतिबो तो जेते थर तमे गोटे एक्शन नबो कि गोटे राइट करिवो किछि भी करिवो सेते थर तमरो जेसन एंड सीआरसी फाइल क्रिएट हे जिवो सर आर यूसेज कौन रहले सर डेल्टा टेबल यूसेज अछि ना यूसेज अछि बहुत अछि हम एटा जस्ट डेफिनेशन डिस्कस करले ओके अरे बहुत सारा एडवांटेजेस अछि एटा गोटे कंप्लीट गोटे गुनो तीन चारटा क्लास लागियो पढिया पे डेल्टा टेबल टा कोन माने यदि हम विथ एग्जांपल देखिबा तो इट्स नॉट ए माने गोटे छोटो जिंस में केना डेटाब्रिक्स रो दीटा जिंस होची मेन गोटे होची स्पार्क और डेल्टा टेबल ओके तो यूसेज टा कोन नेक्स्ट रे पढी देखो क्रिएट हे गेला जस्ट 55 सेकंड्स गोटे क्रिएट हे जे तो जेते थर तमे गोटे राइट को सपोज तमे किछि भी चेंजेस करूचो सबु जाक तमरो एथि कैप्चर हे जेसन फाइल जदि म ओपन करबी सो यू कैन सी दैट ऑल द चेंजेस जहां भी डेटा टाइप चेंज करछो जहां भी करछो यू कैन कैप्चर देखो नंबर ऑफ फाइल्स गोटे नंबर ऑफ आउटपुट रोज नंबर ऑफ बाइट्स केतेटा हला टैग हला सबु जाक डिटेल्स तमरो रहउछ ओके एंड ए जिंस रो कोन होउछ ना तमे जदि किछि डेटा को रिट्राइव करिया को चाहछो यू कैन आल्सो डू दैट ठीक अछि यू कैन रिट्राइव द डेटा एज वेल जदि मोटी करबी देखो स्टूडेंट डिटेल्स रे करली ओके एबे देखो आ गोटे पार्ट फाइल बिकॉज़ अपेंड जेहेतु कले आ गोटे पार्ट फाइल क्रिएट हे गला अपेंड हे गला ओके सेमति पार्ट 000 जति क्रिएट हबो जेते बेले हमर गोटे फिट हे जिवो गोटे साइज ता देन से पार्ट 1 पार्ट 2 एमति क्रिएट हे जिवो ओके सो दिस इज हाउ दिस डेल्टा टेबल क्रिएटेड हम तमे जानि थाओ कि डेल्टा टेबल केमति क्रिएट होउची तार फॉर्मेट कोन ओके ग्रेजुअली हमें देखिबा डेल्टा टेबल एडवांटेजेस कोन होउची ओके कहीं तमें देखो जमती मु कहली स्कीमा इवोल्यूशन स्कीमा जमती एनफोर्समेंट तमें नॉर्मल जो एसक्यूएल की डाटा वेयरहाउसिंग हो कि तमरो एसक्यूएल सर्वर हो सेठी कोन करथलो जते बेले तुम चेंजेस करे पडुथिला तमें क्रिएट टेबल करथलो कि अल्टर करे पडुथिला तुमको राइट गोटे कॉलम ऐड कलो देन तादरे चेंजेस कलो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डू बट एठी तमें डायरेक्टली राइट टाइम रे तमें ए ऑप्शन टा देले इट विल ऑटोमेटिकली मर्ज इट ऑटोमेटिकली ओवरराइट इट तुमको पूरा कंटेंट चेंज करियार नहीं तो तुम किसी डाटा रिभर्ट अच्छे सपोज मु चाहिए कि नहीं मते लास्ट वीक रो गोटे फाइल चेंजेस करिछि कि डाटा चेंजेस करती मते सेही डाटा को रिभर्ट करियार अछि ओके मते माने जहां भी चेंजेस करछि ताको मते रिभर्ट करियार अछि देन आई कैन डू दैट बेसिकली हिस्ट्री को हमें जाई परिबा ओके और मेंटेन जदी हिस्ट्री मेंटेन करियार अछि वी कैन गो टू द हिस्ट्री सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस
सर ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଲ୍ଟା ଟେବଲ କ୍ରିଏଟ କରୁଛେ ତ ହୁଁ ଦିଟା ଫାଇଲ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଦେଖେଇଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଉ ହୁଁ ଗୋଟେ ହୁଁ ଲଗ। ହୁଁ ତ ହୁଁ ପାର୍ଟ ଫାଇଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଡାଟା ରହୁଛି ସାର୍ ଆଉ ଲଗ ରେ ଆମର ଯାହା ବି ରେକର୍ଡ ହେଇଛି ଅପରେସନ। ରେକର୍ଡ ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି କରେକ୍ଟ ଓକେ। ଲଗ ଯାହାର ରହୁଛି ବେସିକାଲି ତମେ ସେଇ ଲଗ ଥ୍ରୋରୁ ତମେ ଯୋଉ ମୋଡିଫିକେସନ ଯାହା ବି ହେଇଛି ତାକୁ ତମେ ରିଟ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଆମର ଯେତେ ଥର ମୁଁ ଡାଟା ସେଇ ଟେବଲ ଉପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛି ଯେତେ ଥର କିଛି ବି ମୋଡିଫିକେସନ୍ସ ଓକେ କରୁଛି ସେଥିରେ ସେ JSON ଆଣ୍ଡ CRC ଫାଇଲ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ରାଇଟ୍। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା କି ମତେ 5 ଦିନ ତଳେ 10 ଦିନ ତଳେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଯାହା ବି ହେଇଛି ମତେ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି ସୋ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସିମ୍ପଲି ଗो ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାକ୍ ଇଟ୍ ଓକେ। ଯୋଉଟା କି ଅଲଗା ଟେବଲରେ ପସିବଲ ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା କଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରେକର୍ଡସ୍ वी कैन इजीली फेच एंड ताकू रिवर्ट भी कर परिबा ओके। तो सेटा होची हमर एक्चुअल डाटा रहबो तमर पार देखो डिफरेंस भी गोटे क्वेश्चन पचारि परंती लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्के फाइल एंड डेल्टा टेबल जेतु एटा होची पार्के फाइल रे रहउची एटा होची हमर पार्के फाइल रे रहउची बट देन व्हाई वी आर नॉट डायरेक्टली यूजिंग पार्के फाइल कहना पार्के फाइल रे कोन होची ना एटा ओनली पार्के फॉर्मेट रे रहइबो से डेल्टा टेबल माने डेल्टा लॉग टा हेटी क्रिएट हबन तमरो ओनली पार्के फाइल रे रहिला दैट्स इट। बट तुम जो डेल्टा टेबल रे गोटे ताकू राइट करूछो तुम डेल्टा लॉग गोटे क्रिएट जोटा कि तुम हेल्प करूची तुम जहाँ भी मॉडिफिकेशन अछि ताकू चेंजेस को कैप्चर करिया पे। सो यू आर कैप्चरिंग ऑल द चेंजेस ऑल द मेटा डाटा इंफॉर्मेशन इन दिस डेल्टा लॉग। यदि किसी मेटा डाटा चेंज होची किछि भी होची यू आर कैप्चरिंग दैट ओके। तो बेसिकली एठी कोन होचे सब जेसन फाइल गली जेसन फाइल रे कोन हैला मोर जहाँ भी डाटा थिला ओके एज रो अछि जहाँ भी अछि जिंसटा अछि केतरा रेकॉर्ड्स ओके। तो से जिनसटा मते आसिला ओके। नेम हे गला एज नेम हे गला तापरे कोन हे गला नेम नेम टाइप तापरे एज तापरे स्ट्रिंग जहाँ भी हैला 1 2 3 4टा रेकॉर्ड्स ठीक अछि। सेम जिंस मते एथरे लोड हे गला व्हाट इज दिस इज फाइन एरर रेकॉर्ड ओके। तुम एजसन फाइल टा देखिबी ये नंबर ऑफ एज एड्रेस ओके ओके CRC file is not supported here देखो एटा हमर जेसन फाइल थिला 9 मिनिट पूର୍ବरु तो एठी कोन थिला हमर एठी नेम आसी गला से स्कीमा टा देछि नेम हे गला एज हे गला एड्रेस हे गला एरर रेकॉर्ड हे गला ओके। तो एठी नेठी हमर जेंडर रो इन्फॉर्मेशन ही नाही ठीक अछि डेल्टा एनेबल डिलीट डिलीट वेक्टर्स ट्रू क्रिएट टाइम ऑल दिस थिंग्स। बट जदि आमे कोन देखिबा एबे हमें 9 मिनिट एबे लास्ट 6 मिनिट जोटा अछि ई जेसन फाइल टा देखिबा ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ଦେଖ ତମର ଜେଣ୍ଡର କଲମ ଟା ଆଡ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି କଣ ନେମ୍ ଅଛି ଏଜ ଅଛି ଆଡ୍ରେସ ଅଛି ଜେଣ୍ଡର କଲମ ଟା ଆଡ ହେଇଛି ସବୁ ଯାକ ମେଟା ଡାଟା ଇନଫରମେସନ ସି ଏଥିରେ କଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖୁଛି ଓକେ। ଯାହା ବି ମେଟା ଡାଟା ଇନଫରମେସନ ଅଛି ଇଟ ସିମ୍ପଲି କ୍ୟାପଚରିଂ दोज ମେଟା ଡାଟା ଇନଫରମେସନ ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ରଖୁଛି। ତ ଯେତେଥର ଆପେଣ୍ଡ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ପାର୍କେ ଫାଇଲ ଗୋଟେ ସେ କ୍ରିଏଟ କରିଥିବି। हाँ करेक्ट ओके। ଯେତେଥର ମାନେ କିଛି ବି ଚେକ ମାନେ ସପୋଜ ମୁଁ ଯଦି કોઈ ବଞ୍ଚ ଅଫ ରେକର୍ଡ କରିବି ଯେମିତି ଥରେ କରିବ ଯେତେ ଥର ଆକ୍ସନ କରୁଛୁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ସବୁ ଇନସର୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କି ସବୁ ଇଏରେ ଆମେ ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ କରିବ। ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଇନସର୍ଟ କରୁଛେ ଦେନ୍ ଡେଫିନେଟଲି ସେ କଣ କରିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ जेसन फाइल क्रिएट करियो कि ଗୋଟେ पार्के फाइल क्रिएट करियो। बट एवरी ट्रांजैक्शन जदि माने मल्टीपल इंसर्ट करूचे गोटे ट्रांजैक्शन आसे त गोटे इंसर्ट करले आ गोटे ट्रांजैक्शन आ गोटे इंसर्ट करले सेमति चलची देन से कौन करिवो ना मल्टीपल पार्ट फाइल क्रिएट करिवो ओके। तो यार एडवांटेजेस मेन एडवांटेजेस कौन होची कि हमर डाटा स्टोरेज टाइप टा तो बेसिकली आमे एत डाटा टाइप स्टोर करूचे पार्के फाइल रो बहुत सारा बेनिफिट्स अछि काहे कि हमें पार्के फाइल यूज करछु हमर बहुत सारा फाइल फॉर्मेट हम पर देखिचे जेसन देखिले आमे जेसन कल देखिथिले तापरे सीएसवी देखिले टेबल देखिले ओके। ए सब केसेस रे कोन होची ना हमर डाटा केमती स्टोर होची रो वाइज हमर स्टोर होची रो वाइज माने डाटा स्टोरेज होची हमर केमती स्टोरेज होबो सबले एमिति स्टोर होची डाटा रो वाइज स्टोर होची ओके।
बुझिला एटा होची रो वाइज डाटा स्टोरेज बट पार्के रे कोन होची ना से कॉलम वाइज डाटा स्टोर करूछ तो बेसिकली पार्के रो यूज करियर बेनिफिट होची से हम डाटा को स्टोर करूची कॉलम वाइज माने नेम डाटा को स्टोर कला एज डाटा को स्टोर कला एड्रेस को स्टोर कला ओके तो बेनिफिट कोन हैला तो एसक्यूएल सब जगह एमथि होची जेतले ओआरसी फाइल हो जा भी हो तमे एटा यूज करछो दैट इज सब जगह हमर कोन होची ना इट्स अ रो फॉर्मेटेड डाटा तो बेसिकली स्टोरिंग द डाटा रो फॉर्मेट रे ठीक अछि बट पार्के रे कोन करछि ना से ताको कलमनार फॉर्मेट रे ताको स्टोर करछि सो कलमनार फॉर्मेट रे गोटे बेनिफिट कोन की एक सेकेंड ओके तो बेनिफिट कोन सपोज तमे कोन करूछो गोटे तमरा बिग डाटा अछि like you can say 10 GB की more than 10 GB data okay तमे तले गोटे क्वेरी लिखुछो केमति लिखुछो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल व्हेयर कंडीशन अप्लाई करछो व्हेयर जतले अप्लाई करछो कहा पर अप्लाई करछो गोटे कॉलम ऊपर अप्लाई करछो राइट यू आर नॉट अप्लाइंग ऑन द रो तो तमे तले गोटे कॉलम ऊपर अप्लाई करछो एंड तमरो जो स्टोरिंग टा अने डाटा स्टोरेज टा तमरो कॉलम वे रे अछि देन सेटा तम पे इजी होबो ना इट्स नॉट लाइक कि तमे देखो कॉलम तमरो सब गोटे लिमिटेड ଯେତେବେଳେ ତମ କଲମ ଟା ସବୁବେଳେ କେବେ ତମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବ କି ରିଅଲ ଟାଇମ ରେ କି ମୋର ନମ୍ବର ଅଫ କଲମ୍ସ ଆର ମୋର ଦେନ ନମ୍ବର ଅଫ ରୋଜ ସେଟା ତ ମାନେ ଆଇଡିଆଲି ସେଟା ହୁଏ ବଟ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ ଦ୍ୟାଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ 10 GB ଅଫ ଡାଟା ଅଛି ଏଇଟା ନାହିଁ କି ତମର 100ଟା 200ଟା କି ତମର 10 GB ଡାଟା ମାନେ କି ତମର ପୁରା ଲକ୍ଷଟା କଲମ ହବ ସେମିତି ତ ହବନି ନା ତ ଡେଫିନେଟଲି କଲମ ନେମ୍ ଟା ସେ ମାନେ କମ ରହିବ ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସର୍ଚିଂ କରୁଛ ଗୋଟେ ରୋ ଲେଭେଲରେ ସର୍ଚିଂ କରୁଛ ତମେ କଣ ପୁରା ପ୍ରପର 10 GB ଡାଟା ଉପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ इट्स नॉट लाइक कि तमे ओनली माने 10 GB ऑफ डाटा एंड प्रति रो वाइज तमे एमती सर्च कलो तापर नेक्स्ट रिकॉर्ड सर्च कलो एमती सर्च कलो सो दैट सर्चिंग केते कॉम्प्लेक्स हो जाउची बट जेतेबेले तमे कॉलमनार फॉर्मेट ऊपर सर्चिंग कलो इट्स अ गोटे कॉलम ऊपर तमे सर्च कलो एंड तमो डाटा भी स्टोर होची से कॉलम ऊपर ओके तो से केस रे कोन होची ना सर्चिंग टा फास्टर होची आमे तमे डाटा क्वेरी एग्जीक्यूशन टा बहुत फास्ट होची इन केस ऑफ पार्के फाइल तो पार्के फाइल को तले रीड करबो इट इज फास्टर कंपेयर टू अदर फाइल फॉर्मेट काहे ना बिकॉज ऑफ दिस कॉलमनार फॉर्मेट तो एटा सबले मन रखितो व्हाट इज अ पार्के फाइल एंड आमे काहे की यूज करछे पार्के फाइल व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग पार्के फाइल because it is storing the data in columnar format so that whenever you are executing query whenever you are applying some filter condition it is directly searching that value in the column itself तमे सब कॉलम ऊपर अप्लाई करछ ना नेम इज इक्वल टू दिस एज इज इक्वल टू दिस एज ग्रेटर देन दिस जेंडर इज इक्वल टू एफ एमती अप्लाई करछ तो आज हमें सही फॉर्मेट रे डाटा को स्टोर करबा देन हम पई ए जो सर्चिंग टा फिल्टरिंग टा इजी हे जिवो ना एग्जीक्यूशन टा एरा फास्ट हे जिवो तो दैट इज व्हाई द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग पार्के फाइल तो बुझियला एटा व्हाट इज द नीड ऑफ पार्के फाइल एंड पार्के फाइल टा एमन डेल्टा टेबल कोन पई यूज होची बिकॉज ऑफ दिस ओनली सो दैट डाटा एग्जीक्यूशन टा डाटा फेचिंग टा हमरो क्वेरी एग्जीक्यूशन टा फास्टर हे परिबो बुझियला अंडरस्टूड सर समस्तकर यस सर ओके ए जिंसटा मन सर रखिता काना हां को नहीं सर बुझिला सर प्लीज बुझियला तो हाँ ए जिनसटा मन रखिता काहे ना एथरे बहुत सारा माने कांसेप्ट इज फाइन बट कंफ्यूजन हुए तळे इंटरव्यू क्वेश्चन पचारंदी बहुत सारा कंफ्यूजन हुए डेल्टा टेबल आ पार्के फाइल जे तुम प्रॉपर्ली जान नथिबो बिकॉज़ माने कंफ्यूज करिवे कि लाइक हां यू आर यूजिंग पार्के फाइल इन पार्के टेबल देन व्हाई यू आर टेलिंग दैट एज अ डेल्टा टेबल तो यू हैव टू टेल देम कि ऑल द डेल्टा टेबल माने तमरो सेटा फाइल टा स्टोर हो पार्के फॉर्मेट रे एंड सेटा गोटे डेल्टा लॉग गोटे एक्स्ट्रा फोल्डर क्रिएट होची जोथरे कि हमें डेटा रो मेटा डेटा आउ जहां भी चेंजेस हेची ताको हमें कैप्चर करिया पे सेटा यूज करछु डेल्टा लॉग टा दैट यू हैव टू आंसर बट जला पार्के फाइल रहिबो सेतेरे हमरो डेल्टा लॉग रहिबोनी केबे पार्के फाइल देयर इज नो सच डेल्टा log will be created okay that is the answer you have to give and the benefits of using parquet file is that it is storing the data in columnar format it stores the data in columnar format okay and also another thing is like तमे देखिथु एठी गोटे यूज होउची कोड वाला सेटा ए जो फाइल रो ए जो पार्ट फाइल क्रिएट होउची तार देखि गोटे लेखा आइची डॉट स्नैपी राइट देखा होउची स्नैपी लेखा आइची स्नैपी डॉट पार्के यस सर यस सर ओके हाँ तो स्नैपी माने होची दैट इज अ स्नैपी कंप्रेशन एटा भी मन रखता बट इट इज वन टाइप ऑफ एडवांटेजेस स्नैपी कंप्रेशन तो डेटा को हमें तले बिग डाटा यूज करछु तो फॉर एग्जांपल हमें बिग डाटा यूज करछु ताको तो कोठो स्टोर करबा ना फिजिकल स्टोरेज करबा तो फिजिकल स्टोरेज जब 100 GB ऑफ डाटा खाली हमें स्टोर करी करी दिबा तो डेफिनेटली यू कैन अज्यूम
हमर केते मेमोरी कंज्यूम हबो बट डेल्टा टेबल कोन करूची ना सी तार गोटे कोन करी कि गोटे कंप्रेशन ओन कंप्रेशन यूज करूची सो दैट तमरो एटलीस्ट 70 to 80% कंप्रेशन हे जाउची डाटाटा ओके तो बेसिकली ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट डाटा को स्टोर करछि सो दैट इट कंज्यूम्स लेस मेमोरी तो मेमोरी कंजम्पशन टा लेस होउची एंड आमे गोटे कम स्पेस रे अधिक डाटा को स्टोर करि पारछु राइट दैट इज आल्सो अनदर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पार्के फाइल तो पार्के फाइल ऑलवेज हमर यूज करछि स्नैपी कंप्रेशन तो स्नैपी कंप्रेशन कोन कि डाटा को एतले स्टोर कर सपोज 10 जीबी डाटा को स्टोर 10 जीबी रो डाटा को स्टोर करबा सी हमर 2 जीबी की 3 जीबी रे हे जिवो हम तो यू कैन इमेजिन हमर केते रिड्यूस हे जाउची नंबर ऑफ स्टोर्स ओके so these are the three advantages of using parquet file or delta table हमर गोटे हिस्ट्री मेंटेन करछि delta table रे हमें कोन करछि ना गोटे लॉग को कैप्चर करछे delta table रे पार्ट फाइल फॉर्मेट डाटा स्टोर होछि सो दैट आउट कोन होछि पार्ट फाइल रहले भी हमर पार्टीशन टा प्रॉपर्ली मेंटेन होछि ओके कलमनार फॉर्मेट रे रहउछि सो दैट हमें कॉलम वाइज गोटे फिल्टर की गोटे किछ अप्लाई कर परछे सो ऑल दिस एडवांटेजेस वी आर गेटिंग बेसिकली जोटा हमर बिग डाटा पई दरकार स्मॉल डाटा रे सब किछि हिजिवो किछि एटा बड़ कथा नै बिग डाटा रे कोन होछि ना सर्चिंग टा बहुत टाइम लागिवो तो फॉर एग्जांपल माने इमेजिन करो ग्रेजुअली तुम माने कोन जते ईयर बढ़ुची सोशल मीडिया रे बहुत सारा डाटा आछी ओके तो डेटा बढ़ुची देन तमरो बहुत सारा यूजर रजिस्टर करछन बहुत सारा एपीआई बहुत सारा जिंस आसिलानी प्रीवियसली लोक केते 10 इयर्स बैक बहुत कम लोक इंटरनेट यूज करथले करंटली मेनी पीपल आर मेनी मींस ऑलमोस्ट ऑल द पीपल आर यूजिंग ओके तो से केस रे कोन डाटा बहुत ह्यूज हे चलछि ना सेति पे बिग डाटा वे रे ही आमे ताको डाटा को फिल्टर आउट कर परिबा डाटा को स्टोर कर परिबा तो स्टोरिंग मैनेजिंग अ डाटा इट्स वेरी वेरी टफ दैट्स व्हाई आमेर ए सब टेक्निक्स यूज करछु नहले ट्रेडिशनल टेक्निक इज फाइन ट्रेडिशनली हमें जहां भी यूज करो दैट इज फाइन वी डोंट हैव टू यूज डेटाब्रिक्स यूज करा होची कि हमर सब रिक्वायरमेंट जो अछि ताको फुलफिल करिया पे वी आर यूजिंग डेटाब्रिक्स सो दैट हमें प्रॉपर्ली गोटे डाटा को मैनेज कर परिबा प्रॉपर्ली डाटा को फेच कर परिबा एंड स्टोर कर परिबा विथ लेस कॉस्ट ओके सो कमिंग टू द नेक्स्ट तो आमर डेल्टा लेक टा केमिति आसला एक्चुअली दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ डेल्टा लेक सो बेसिकली आमर तीनटा कांसेप्ट अछि डेल्टा लेक मु कहितली कि डाटाटा गोटे स्टोरेज लेयर गोटे सेटा ओके डाटा रो गोटे कोन सेटा गोटे स्टोरेज लेयर ठीक अछि तो डाटा वेयर हाउसिंग हम तो यूज करूछु तो डाटा वेयर हाउसिंग गोटे होची कांसेप्ट जेंति डाटा वेयर हाउसिंग एटा गोटे स्टोरेज लेयर ओके से स्टोरेज लेयर रे कोन होची ना हमर डाटा वेयर हाउसिंग रो कांसेप्ट ही होची एंड डाटा वेयर हाउसिंग नो एटा ओनली काम करे स्ट्रक्चर डाटा पे लेफ्ट साइड यू कैन सी फर्स्ट एटा होची ट्रेडिशनल वे ऑफ डेटा स्टोरिंग एंड डेटा स्टोर करथिले हमें स्ट्रक्चर डेटा को टेबल रे स्टोर करथिले देन ईटीएल यूज करथिले ईटीएल टूल जेमति यूज करथिले आमति हमरा इन्फॉर्मेटिका हे गला अलगा ईटीएल टूल अछि ताको यूज करथिले स्ट्रक्चर डेटा को फेच करथिले देन डेटा वेयर हाउस रे हमें ताको स्टोर करथिले देन स्टोर करला परे ताको हमें डायरेक्टली पावर बीआई और रिपोर्ट रे फेच करथिले दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ यूजिंग डेटा वेयर हाउसिंग तो एथिरे आर लिमिटेशंस कोन थिला कि हमें ओनली स्ट्रक्चर डेटा यूज करि परिबा अदर डेटा हमें यूज करि परिबा तो हम रियल टाइम रे हमें स्ट्रक्चर डेटा केते पाइबा इट्स वेरी हार्ड टू गेट स्ट्रक्चर डेटा हमें फाइल को हमें नहीं कि ताको कन्वर्ट करि परिबा बट डायरेक्टली गेटिंग द स्ट्रक्चर डेटा इट इज वेरी डिफिकल्ट okay so but it has the limitation ki it will only work with the structured data the semi structured data achi it cannot read that one hame say semi structured data re tame काम कर परिबानी what is the disadvantages of data warehouse okay and also it was taking a lot of time data warehousing ta eta बहुत time laguthila process करिया पे okay but then later it came what data lake so data lake रे कोन होची ना हमरो you can see that it is very basically used to store it is basically used to work with the structured semi structured or unstructured data जोटा कि हमर data warehousing रे lack थिला so that thing we can handle by using this data lake जेमति हमर एटा जो warehousing हे गला image data youtube जेमति video data audio data okay किछि pdf file data all these are the we can say the unstructured data okay or we can say that amaro semi structured data जेमति कहली json file अछि these all are the amaro semi structured data okay so जो semi structured data अछि amaro तो semi structured data को आमे केमति आमे ताकू ताकू रीड करि परिबा एंड ताकू लोड करि परिबा ओके बट एथिरे कोन होतला डेटा लेक रो गोटे कोन कि तारा डिसएडवांटेजेस होची that is not able to perform the acid compliance okay the acid compliance अछि that is not able to perform kahi ki na
एसिड कंप्लायंट रे प्रॉब्लम होतला कि हमर जति भी डाटा किछि करप्ट हे गला किछि भी डाटा प्रोसेस फेल हे गला किछि भी हैला देन से कोन करथला डाटा देयर इज अ चांस दैट हमर डाटा लॉस देयर इज अ चांस ऑफ डाटा लॉस ठीक अछि तो सेति यस सर पय कोन होति ना एसिड कंप्लायंट तमे जानिछो स्कूल रे पढिथिबो व्हाट इज एसिड कंप्लायंट यस ओके सर यस सर ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी करेक्ट ओके आइसोलेशन तो टेबल बेसिकली कोन होची ना जदि मल्टीपल ट्रांजैक्शन हमें गोटे टेबल रे की गोटे फाइल ऊपर परफॉर्म कले देन इट वाज गिविंग एरर so basically there is a maybe a chance of deadlock maybe a chance of data loss or anything तो से केसेस को हैंडल करिया पई हमें कोन गला डेटा डेटा लेक कोन गला हमर सब हैंडल कर देला स्ट्रक्चर्ड डेटा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा also it is it has advantages of using working with the large big data okay we can say but the problem is it is not acid compliant so basically एबे देखिबे कि जदि भी हमें ट्राई करिबा डेटा लेक रु हमें करिबा कि नाही पावर बीआई की रिपोर्ट को कनेक्ट करिया पे वी नीड द हेल्प ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग तो हमको डेटा वेयर हाउसिंग रो हेल्प दरकार नहले हमें डायरेक्टली पावर बीआई और पावर बीआई को कनेक्ट कर परिबा रिपोर्ट जनरेट करिया पे हमें कनेक्ट कर परिबा ठीक अछि so that is why one kind of disadvantages of using data lake is we cannot directly connect to power bi बेसिकली कोन हमर एडवांटेज दरकार कि हमर आउटपुट हमर कोन दरकार तो हमर दीटा आउटपुट हमें जहाँ भी डाटा जनरेट करिबा हमर जो फाइनल टारगेट आउटपुट दैट इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय whom either power bi team or our machine learning team data science team they will consume that data and they will build the model or power bi team will consume the data and they will simply prepare the report visualization so this is their main goal ठीक अछि बट द थिंग इज लाइक आमे डायरेक्टली ताको जनरेट करिबा डेटा लेक रो होची तारो डायरेक्ट कनेक्टिविटी नाही टू द पावर बीआई ओके जोटा कि हमर डिसएडवांटेज डेटा लेक रो दीटा डिसएडवांटेजेस रहि गला जोटा कि हमें डायरेक्टली हमें पावर बीआई को कनेक्ट कर परिबानी and there is some limitations and it is not acid compliant ओके एंड सेठु हमर माने गोटे हैला कि आमे दीटा को कंबाइन कर देले जोटा कि बनेले लेक हाउस डेटा लेक हाउस ओके जोटा कि कंबाइन करी कि बना हला एंड दैट टेक्निक बेसिकली डेटा लेक हाउस गोटे होची कांसेप्ट दैट इज बीइंग यूज्ड बाय द डेटाब्रिक्स तो डेटाब्रिक्स रो गोटे लेक हाउस गोटे कांसेप्ट ता अंडर रे हमर होची डेल्टा लेक ओके डेल्टा लेक होची माने कोन डेटा लेक हाउस रो गोटे कांसेप्ट होची हमर डेटा लेक माने डेटा लेक हाउस गोटे होची कांसेप्ट डेटाब्रिक्स रो जोथरे कि हमें डेल्टा टेबल यूज करछु ठीक अछि so that is what you have to know delta lake is kind of we can say that it's a technology we can say delta lake and we are using the format delta table and lake house is a complete माने concept डेटा को स्टोर करिबा मैनेज करिबा कनेक्ट करिबा सब जिंस को गोटे कंप्लीट जिंस को हमें कहबा इट्स अ डेटा लेक हाउस तो बुझियला द जेतबे तुमको क्वेश्चन पछरे व्हाट इज द डिफरेंस बिकॉज़ एई तीनटा डिफरेंस मोस्टली पछरंती ओके जे पचारो न पचारो बट डेटा लेक हाउस इज मस्ट तमे डेटा ब्रिक्स रे रिक्वायरमेंट अछि माने डेटा लेक हाउस इज मस्ट को टेक्निक्स तमे यूज करछो डेटा ब्रिक्स रे फॉर मैनेजिंग द डेटा स्टोरिंग द डेटा सब जिंस करिया पे को टेक्निक यूज करछो यू कैन से दैट इट इज सिंपली डेटा लेक हाउस वी आर यूजिंग एंड लेक हाउस रो नेमिंग कन्वेंशन केमती हला डेटा वेयर हाउस रो हाउस आसिला एंड डेटा लेक रो लेक आसिला इट्स अ कंबाइंड डेटा लेक हाउस ठीक अछि बुझियला डेटा लेक हाउस ता केमती हला एंड एडवांटेजेस कोन हला आरो सी एटा होची कंबाइन एटा मस्ट जोटा भी कि हमरो एडवांटेज अछि डेटा वेयर हाउस रो सी आको पिक कर देला देन अधरे पुट कर देला जोटा कि हमरो डेटा लेक रो एडवांटेज सी ताको पिक कला अधरे पुट कर देला सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा लेक where data warehousing कोन करछि हमरो से हैंडल करि परिबा स्ट्रक्चर डेटा को and it is acid compliant and it can connect directly to the power bi so it took that property from the data warehousing but data warehousing रो disadvantage कोन एटा unstructured semi structured data रे काम कर परिबो but से जिंसटा कोन हमर डेटा लेक करि परिबो so basically lake house pick that property from the data lake तो से प्रॉपर्टी टा पिक कर देला एंड इट कीप इट विथ दैट डेटा लेक हाउस सो बेसिकली ये जो कंबाइन को बेस्ट जो दीटा जो कांसेप्ट हमर अछि डेटा वेयर हाउसिंग और डेटा लेक रो तार जहां बेस्ट अछि बेस्ट फीचर्स अछि इट पिक दैट बेस्ट फीचर एंड कीप इट इन डेटा लेक हाउस एंड इट प्रिपेयर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डेटा लेक हाउस सो दैट हमें कोन एठी करि परिबे कि डायरेक्टली वी कैन रीड द स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड एटा गोटे मेटा डाटा गवर्नेंस लेयर हमें क्रिएट करछु ओके बेसिकली हमें गोटे मेटा डाटा क्रिएट करछु इट्स कॉमन टू ऑल ओके एंड इट इज लाइक सेटा को हमें कोन गोटे 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 टाइप रहउछ हमरो
डेटा टाइप माने गोटे मेटा डेटा रो गोटे गवर्नेंस टूल गोटे क्रिएट करछे बेस्ड ऑन दैट आमे सब डाटा को डायरेक्टली कनेक्ट कर परिबा डेटा पावर बीआई को कनेक्ट कर परिबा रिपोर्ट डेटा साइंस मशीन लर्निंग सो एवरीथिंग वी कैन डू इन अ सिंगल वर्कस्पेस सो जोटा कि हमने गुड एडवांटेजेस लाइक आमे कोन करिया आगुर कोन होतला कि तमे गदी गोटे वर्कस्पेस रे काम करिवो बेसिकली वर्कस्पेस गोटे अलगा कांसेप्ट आई विल टेल यू लेटर सो वर्कस्पेस माने जोठी हम काम करछो माने तमे जेमति वर्क स्पेस माने जेमति कहउछ तमे गोटे घरे काम करछ से वर्क स्पेस रे आउ काहा को अलाउ नाही नो अदर अदर पीपल कैन वर्क दैट ओके आउ जने आउ गोटे को वर्क स्पेस रे काम करबो आउ जने आउ गोटे को वर्क स्पेस रे काम करबो कहार वर्क स्पेस को काहा को अलाउ नाही ओके सो बेसिकली सेमति नाही डेटा लेक हाउस रे कोन होछ ना एवरीवन कैन वर्क इन अ सिंगल वर्क स्पेस so basically data science team data engineering team and the power bi team all the people they can collaborate with each other and they can work in a single workspace जोटा कि हमरो डेटा लेक हाउस रो एडवांटेजेस एटा गोटे गवर्नेंस लेयर कर देला इट्स अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वी कैन से ओके इट्स अ सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी वेयर everyone can work and everyone can access each other's data and they can work on that ओके तो डेटा रो हमरो किछि माने कोन गोटे रेस्ट्रिक्शंस आउ रहिलानी एथरे कि माने कोन कि आमे गोटे डेटा एठी रहिला देन ताकू फेच बिकॉज़ डेटा फेचिंग इज वेरी डिफिकल्ट गोटे जगह आम डेटा स्टोर करबा से जगह डेटा फेच करबा जदि सेटा अलगा प्लेटफॉर्म रे अछि देखो जेमति तमे करछो कि सपोज सिंपल जिंस तमे तो गोटे डाटा कॉपी करछो सेम तमे गोटे लैपटॉप रे कॉपी करछो सेम फोल्डर रु आ गोटे फोल्डर को तमरो फास्ट होउची तो तमे गोटे पेन ड्राइव रे कॉपी करछो डेफिनेटली टाइम लागुची राइट बिकॉज़ पेन ड्राइव टा अलगा स्टोरेज लैपटॉप टा कोन सेम स्टोरेज सो सेम जिंस कांसेप्ट एठी होउची जे तमे सेम गोटे एनवायरनमेंट रे कि सेम गोटे रिपोजिटरी रे समस्त काम करछो डेफिनेटली तम डेटा टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब किछि तम पे इजी हबो फास्टर हबो बट तमे जे अलगा सिस्टम रे अलगा काम करछो तम तो डेटा फेच करछो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ओके जेतले हमर पाइपलाइन टा बना होची पाइपलाइन कोन कंप्लीटली कॉम्बिनेशन तमे एमती पाइपलाइन बनेबो कि लाइक यू आर टू यू वर्क विथ डेटा इंजीनियरिंग then that will be automatically called to the data science activity data science pipeline and that will execute and finally it will build one model so that तम डेटा एग्जीक्यूशन टा फास्टर हो जिवो बट तमे यदि मल्टी डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्पेस हो के काम करिवो देन डेफिनेटली इट विल देयर विल बी सम लैग डेटा फेचिंग और डेटा स्टोरिंग रे तमरो गोटे लैग क्रिएट हो जिवो ओके सो दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग डेटा लेक हाउस तो डिफरेंस टा बुझियला तीनटा भितरे इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस okay what is the difference between data warehousing and data lake house what is the difference between data lake and data lake house or delta lake or data lake anything can be asked सर डेटा लेक हाउस रे ଗୋଟେ प्रॉब्लम हेबुनी सर जेमति मेटा डाटा रे किछि चेंज हैला तो से सब जा ऊपर इफेक्ट पकेउनी सर बीआई ऊपर साइंस ऊपर मशीन लर्निंग ऊपर ନାଇଁ 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 बट ସେମିତି 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 ମାନେ ହଁ ସେମିତି ହେଲେ କଣ ହବ ଆଟ ଦ ଏଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି ନା ସବୁ ଯାକ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ डेटा इंजीनियरिंग तमे जहाँ भी रिपोर्ट जनरेट कल ओके तो तमे ओके सेटा सर एटा फेच कल ना एंड देखो चेंजेस तमे करबोनी देखो चेंजेस तमे करबोनी सेटा बेसिकली ता भितरे तमे कोन स्ट्रक्चराइज करि परिबो गोटे सेंट्रलाइज तार सिस्टम अछि हमें यूनिटी कैटलॉग रे पढिबा गोटे सेंट्रलाइज सिस्टम अछि कि तमे जेंति यार तमे कोन टेबल रे यूज करथुलो केमति स्कीमा एंड टेबल यूज करथुलो एंड यस तम सर तम स्ट्रक्चर टा केमति बट एठी कोन होची ना तीनटा लेवल यूज होची कैटलॉग नेम स्कीमा नेम टेबल नेम सो तमरो कैटलॉग लेवल रे समस्त सेम रहउची बट स्कीमा लेवल विल बी डिफरेंट राइट यस सर राइट सो बेसिकली तमरो दी कैटलॉग लेवल रे तमरो अपर लेवल रे तमरो सेम एक्सेस रहउची बट माने जले तमे गोटे लेवल डाउन को आसुचो तमरो पूरा स्ट्रक्चराइज कर दोचो लाइक गोटे स्कीमा रे तमे काम करिवो पावर बीआई टीम गोटे स्कीमा रे अलगा गोटे टीम काम करिवो सो दैट से जिंस रे कोन होची ना तमे सेम सिस्टम टा सेम रहला बट तमे ताकू सेपरेट करछो ओके तो दैट इज एमती किछि प्रॉब्लम हबनी बिकॉज़ ओके कोलैबोरेटली सर तमे काम करछो ओके आउ कहर कोन डाउट्स अछि ए तीनटा बिकॉज़ ए तीनटा वेरी इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जोटा कि बहुत थोड़ा पचारंती क्वेश्चन माने इंटरव्यू रे कि एटा केमती यूज हबो कोन हबो ऑल दिस थिंग्स ओके ठीक अछि एटा हमें पढ़िया काली पढ़िबा एटा डेटा वेयरहाउसिंग डेटा लेक मोस्टली तो मु कहि देछि ऑलमोस्ट ऑल बट स्टिल लाइक हमें डिस्कस करिबा डेल्टा टेबल आ डेल्टा लेक कोन होउची कोन केमती यूज होउची
एंड एग्जांपल्स गुडा एंड तमे भी टिके ट्राई करो प्रैक्टिस करो जोटा जोटा मु कहतिली कि लाइक मल्टीपल वैल्यूज नहीं की तमे ट्राई करो अपेंड करिया पे मर्ज करिया पे सो दैट डेल्टा टेबल एट एडवांटेजेस ओके फाइन Yes, sir. ओके सो आई विल सेंड दिस वन एटा तमे प्रैक्टिस करो ओके यदि किछि डाउट्स होतो विल डिस्कस टुमारो Okay, sir. ठीक अछि विल सी टुमारो ओके चल थैंक यू सर। Thank you, sir.